Hello guys, can you hear my voice? Is I'm audible? So ये है गोल्ड का चार्ट, 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक मैंने ड्रॉ किया हूँ। ड्रॉ ब्लॉक से ऊपर की तरफ मार्केट मूव कर रहा है, कॉन्स्टेंटली देख सकते हैं भाई। दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक ऑफ 1 मिनट। आई होप यू कैन सी दिस एंड ये प्रॉपर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हो। ये वाला ब्रेक किया तो भाई मार्केट पूरा गिर जाएगा 3080। until that we gonna get a big bullish move up to this if it respect, तभी अच्छा खासा मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। नहीं तो ये वाला ब्रेक करेगा तो भाई मार्केट पूरा गिरेगा। ये फिर से कल जो गिरा था यहाँ तक, ये लास्ट यस्टरडे का फॉल है, तो वहां तक गिरने का भी चांसेस है। ठीक है, right now only one minute order block. I'm just seeing and I'm telling you the chance of market can go upside from this area. Okay, so simple way, if anyone want to go, you can go for the long right now and with a proper money management, because gold is crazy, you know that, and it's very hard and unpredictable by day. तो ठीक है, तो until that हम लोग कुछ देखेंगे। So I hope you can hear my voice, and if you have any doubt you can ask me. मैंने बहुत कुछ आज ड्रॉ किया, ट्रेड लिया था, and these are some zone. It's going upside from here, the block minimum up to 3112। तो यहाँ से भाई पूरा यहाँ तक जाना चाहिए मिनिमम। ओके, ये वाला लिक्विडिटी जो भी है यहाँ तक आना चाहिए मार्केट को। प्रॉपर होल्ड करूँ तो काम के लिए करा यहाँ पर है वो वाला ट्रैकिंग का, तो ऑब्वियसली मेरे लिए तो भाई यहाँ तक आना चाहिए मार्केट को। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। So if you guys have taken any trade, let me know. Oh, yesterday even I have hold it for more than 120 pips, 30 pips, and I made a profit in it. Right, like if you see, market gonna go upside up to here. So let's wait, let's see what happens. Okay, come on, let's go। ऊपर की तरफ पूरा जाना चाहिए। ओके, नाइस। At least those who have taken, they can book some 80% of your profit, and until it break this area we are not going for the sell. Till that we are gonna expect only buy, and we might see some okay buy profit going up. Why the market is going up from here, if you see, here is the proper order block, the market, you can see the fair value gap here. Okay, you can calculate this is as a order block, a fair value gap, or you can call us this, and you can see it hasn't touched this area, that means it hasn't intersect.
or has a medicate. So that is the reason market has moved up to here, and you can see that this is the like a hidden shoulder type of pattern market is making there. So like that, can make it okay. Hidden shoulder type of pattern, and I just see this. Okay, so let's see to here also market is possible. Okay, so that is the reason of I have put my TP up to here. Let's go, let's see what happens. And if it doesn't, I mean like if it break this hidden shoulder pattern, then obviously market will grab this low liquidity, the demand area. So there is liquidity here, market will obviously will come up to here to grab this liquidity, and then market might fall. Like yesterday we have taken a trade from this area. You guys remember? Yes, remember from this area we have taken, and I hold the trade for 120 pips, 120 or 130. But if you just see and calculate how much pips market has gone from our trade zone area, you can calculate and see it gone more than 800 pips. Okay, more than 800 pips. But my target was up to this area. So those who were yesterday in our live stream, हम लोग बताए थे भाई लास्ट होप है यहाँ से मार्केट जाने के ऊपर की तरफ, एंड वो चला गया। मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक कर लिया, एंड राइट नाउ मार्केट नीड टू गो 3114। ओके, बोल भाई एक क्वेश्चन यार, रुक जा भाई, इतना क्वेश्चन था क्या मैनेजमेंट लेना चाहता हूँ 500 के, मैं ये फॉरेक्स का मैनेजमेंट लेना चाहता हूँ। ओके भाई, इतना एक मिनट रुक जा गाइस। रुक जाओ। गिव मी अ मिनट। লালা আমি করেছি।
Okay, okay, I hope you can hear my voice right now. Camera is off. Let me check this camera again. So right now you can see me, right? Just the way I told you होता है. तुम बोलोगे कि भाई लॉस नहीं होगा तो भाई मैं खुद ही बोल देता हूँ भाई लॉस होगा. फिर भी you have to trust on us, then give us. If you don't have, please don't give us. We are not forcing anyone. ठीक है? तो आई होप यू कैन सी दिस. 4 आवर्स 5 मिनट में अभी मैंने क्या बताया, मार्केट जाएगा ऊपर की तरफ एंड वो भी गया था यहाँ तक. ओके, क्योंकि एक टाइप ऑफ हिडन शोल्डर फॉर्म कर रहा है. सो आई एम एक्सपेक्टिंग अप टू हियर. यू कैन सी दिस. मार्केट ने क्या किया था, 12 तक आया था, बट माय एक्सपेक्टेशन इज अप टू 14. लेट्स सी. अभी 10, सो 40 पिप्स और भी ऊपर की तरफ जाना चाहिए और भी ऐसा फॉर्म दैट. Buy, can I take? Yeah, brother, you can take it. Yes, you can take it with a very low risk. I hope you can see the ACL and DB. ACL will be like below here, so 60 pips of ACL, so 96 to 40, and okay, 100. So it's big ACL, bro. If you ask me, if you enter now, your ACL will be big. So try to understand. You, you can come out in 104. Okay, you can come out in 104, and you can keep your TP up to 1114 because I want market to hit up to this area to make it a hidden shoulder. Okay, I go a long time बाद आया हूँ bro. हाँ कृष्णा brother, I can see brother आपने बहुत टाइम बाद आए हो. So you guys there? If you guys there, do thumbs up. Okay. कितने रिस्क से कैसे मुझे कुछ नहीं बताया, जस्ट पेमेंट करना हुआ को बोला. तो भाई ऐसे करे तो भाई मत दो, ठीक है. So I will tell you what is the risk and ratio. So first of all, there will be a manual trade, there will be a EA trade. ठीक है, मतलब एल्गो ट्रेडिंग भी रहेगा एंड मैनुअल ट्रेड भी रहेगा. एक एक ट्रेड पे हमारा, देखो मान लो कि मैनुअल पे ट्रेड हो रहा है. मैनुअल पर 50 पिप्स का, आई मीन 30-40 पिप्स तक होल्ड करते हैं टीपी को भी मिनिमम, एंड एसएल भी 30-40 पिप्स तक होल्ड करता है. लेकिन बॉट जो एल्गो ट्रेडिंग है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है. वो उसको पता है मार्केट कौन सी डायरेक्शन पे जाएगा, लेकिन वो बहुत ही ड्रॉ डाउन लेगा. ओके, बट समटाइम्स आपको लॉस हो जाए, तो मान लो लॉस होगा तो भाई $20 का लॉस होगा. ठीक है, एल्गो ट्रेडिंग पे, क्योंकि वो लो रिस्क पे सेट है. तो 0.01 पे भी जाए तो $10 से $15 और $20 मैक्सिमम. ओके, सो मैक्सिमम $20 योर लॉस पर वन ट्रेड. ओके, एंड वो तुमको मिनिमम तुमको 8 से मिनिमम $5 तो प्रॉफिट वो देगा. तो ऐसे कंटिन्यूसली एल्गो टाइप है वो, एंड वो लेयर पे ट्रेड करता है, तो मिनिमम 3 लेयर ट्रेड लेता है. सो रिस्क है. तो क्योंकि आप जानना चाहते हो तो भाई इसलिए आपको डायरेक्टली ओपनली बता रहा हूँ, रिस्क है. एंड आप चाहते हो कि सिर्फ मैनुअल हो, तो भाई इट्स नॉट पॉसिबल. मैनुअली हम लोग ज़्यादा नहीं लेते हैं, क्योंकि ऑल डूइंग द वर्क, सबको पास टाइम नहीं है कि भाई मैनुअली सबका अकाउंट पे ट्रेड ले. तो इसलिए बॉट भी सेट है. बॉट अच्छा खासा प्रॉफिट देता है. इफ यू सी दी परफॉर्मेंस, हफ्ते में माइट बी हिट 1 एसएल, बट डेली तुमको अच्छा खासा प्रॉफिट देता है. एंड प्रॉफिट का भी हम लोग प्रॉफिट स्प्लिट भी लेते हैं. ठीक है, तो कॉस्ट देर मेकिंग प्रॉफिट. लेकिन जब एसएल हिट हो जाएगा, इट माइट, एक हफ्ते का जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 50% चला जाएगा एक एसएल हिट पे. तो इफ यू थिंक दैट, इफ यू ट्रस्ट अस, देन गिव अस. नहीं तो मैं डायरेक्टली ओपनली बता दिया मैंने तुमको सब कुछ, तो आप देख सकते हो. ठीक है, समझ सकते हो. डिसीजन इज अप टू यू. एसएल एंड टीपी. सो इफ यू आस्क मी एसएल एंड टीपी कहाँ रखे, देखो इफ यू आर इन अ बाई, यू कैन कम आउट नाउ. डोंट पुट एनी, ओके, don't take any buy right now, because if it close this candle, then market will come down up to here again. And I'm just expecting a hidden shoulder. So I can see that shoulder area is pending. So that is the reason. Here I will expect a sell. Okay, I just scroll down and I can see here is the shoulder area. This is the 1 minute OB. Here 1 minute ka OB. And if it 1 minute ka OB break, then you can enter for the sell side minimum 3077 to 3065.
and I will suggest right now to enter any trade because it trying to break. Let it come to this zone area so that you can enter from this order block. Already order block has tapped one time, so this is not a proper valid order block right now. Okay, so don't expect market to go up to here or up to here because already market ने tap किया and from that to here it came. So if you just scroll down and if you see the TP, ये यहाँ से यहाँ तक चला भी गया which is like 1500 point. Okay, 1500 point market चला गया and that means 150 pips already market ने push कर दिया. Okay, I hope you can see ये वाला जो low है यहाँ से यहाँ तक. So drag you can see 1658, that means minimum 160 pips. So right now if it break this low, obviously it will fulfill this order block and it might go downside. So if you expect, you can get a one more buy from here, otherwise it will fall. We can see so much of drastic fall yesterday and we took a buy from this area and it gone up to 800 pips. So if you just calculate, but I booked 130 140 pips, you can see this how much it is, 8176. Okay, so yesterday's trade was that, but right now I can see that it started to break. So don't enter now, try to enter from here. The number is 3097 and here SL will be okay 50 to 60 pips because the order block is big. If you see the order block in 1 minute time frame, you can see this is the order block, and after here make it a bullish candle, we will go for the long. Otherwise if it continuously bearish candle, then we will enter from this area 3092. Okay, yes brother, क्योंकि देखो आई डोंट वांट कि भाई जो मेरे को ट्रस्ट करके आएगा उसका कुछ लॉस होता हो, आई फील बैड. ठीक है, तो डायरेक्टली तो इसलिए मैं बता दिया क्योंकि यू हैव टू टेक अ डिसीजन. मैं ये भी बोलोगे कि भाई प्रॉफिट होता है, ठीक है, बट समटाइम्स आपका हिट हो जाए तो भाई आपका जो भी प्रॉफिट हुआ उसका 50% चला जाएगा, क्योंकि वी टेक अ लेयरिंग ट्रेड. एल्गो पे लेयरिंग ट्रेड होता है एंड उस पर चला जाए तो भाई यू नो दैट उसमें बहुत ही लॉस हो सकता है. फिर भी इफ यू हैव अ ट्रस्ट ऑन अस यू कैन गिव अस, अदरवाइज इफ यू थिंक भाई रिस्क बहुत है, ट्रस्ट यहाँ पर काम नहीं करेगा, रिस्क कम करेगा, तो भाई मत दो. ठीक है, डायरेक्ट. सो एनीथिंग एल्स you have, you can ask me. So yesterday how many of you have taken trade, I don't know. Yesterday live I have given you this trade and which I took. Okay, obviously the trade which I have given you yesterday, I don't know how many of you remember. Before closing our stream, what did I say? Market will go up from here. The reason also I was very clearly showed you 1% of hope, drawed a Fibonacci. I can see that market was inside the Fibonacci, and I told that until it break this, we are not going for the sell. We will go for the only long, and it gone 800 pips. I don't know guys how many of you made a profit in this. Okay, अभी एक कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज होता तो भाई we might get a upside move, लेकिन आज बहुत ही रिस्की है. So if you take a trade today, always divide your lot size. Please don't enter today with a high lot. You can see yesterday it's also a huge downfall and sudden move, then after again huge downfall, then again you can see sudden move, so again it's a huge downfall. So if you enter in a buy set, please enter with a very low risk, I would say now, and always calculate your risk because I'm not sure yet because already this order block has tapped. So I would say you can follow this order block and take a trade, but it might work. Okay, so if you have a money to take a trade, take it, other just leave it right now. Just leave it right now. I don't want to take it right now because if you see this candle has gone more than 150 pips from this order block, and I've been telling you from this area like 101 something I've told you. So wait patiently, we have to see the candle closes down, then we might get a sell move. Let's see. Okay, we might get a down move. So any other currency, if we want, we can see that. ओके, ये था कौन सी ट्रेड, कल का बाई जो भी दिया था भाई, बाई आया था यहाँ तक, उसके बाद 50 to 60% आया था मार्केट
एंड ये देखोगे तो यहाँ से रेड कलर कैंडल फॉर्म हुआ था, एक्सपेक्ट किया था यहाँ तक, लेकिन ये ऑलवेज 50 to 60% आ जा रहा है मार्केट पे प्रॉफिट, उसके बाद हिट हो जा रहा है। जैसे मान लो यहाँ से हमारा ट्रेड था, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मैंने ड्रॉ किया था, फ्यूर इंटरेस्ट समथिंग था, तो यहाँ से देखोगे तो भाई 50-60 पिप्स आया था। उसके बाद जब कैंडल क्लोज किया, मैंने बताया यू कैन गो फॉर द सेल, यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ से तुमको 25 पिप्स ही मिला। सो समटाइम्स यू कैन सी full sideways fall and call out. GBP USD also same. Right now it's doing a time pass, so don't take any trade. Okay. And let's go to the 4 hours. हम लोग 4 आवर्स पे देख लेते हैं। फीवो रिट्रेस है तो भाई हम लोग का एक बाय मिल सकता है यहाँ से। ओके, ऑलरेडी फिबोनाची ब्रेकआउट हो चुका है। पॉसिबिलिटी सब है कि भाई चांसेस थोड़ी कम है बाय की तरफ, बट फिर भी 1% ऑफ होप पे भी मार्केट जा सकते ऊपर। ओके, मूव तो कर रहा है ऊपर की तरफ। लो रिस्क पे कोई भी चाहते हो, लो रिस्क पे एंटर करो तो क्वांटिटी कम करके। ओके, न्यूज़ में क्या होगा गलिश ब्रदर, अभी देखोगे तो भाई आज एंड कल 2 दिन मार्केट बहुत ही खराब चल रहा है। यू कैन सी दिस, वी हैव टू सी भाई बिफोर न्यूज मार्केट ये वाला ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया, तो भाई यहाँ पर भी मिनिमम ओके ऑर्डर ब्लॉक है, तो मतलब इसका जो लो है ऑब्वियसली मार्केट आएगा इसका लो ग्रैब करने के लिए, तो मेरे लिए तो भाई सेल रहेगा। ठीक है, क्योंकि इतना हाई ऊपर की तरफ पुश किया है, एंड मान लो बिफोर न्यूज मार्केट कम्स अप टू हियर, देन वी विल गो फॉर द लॉन्ग फ्रॉम हियर, और मान लो न्यूज के समय मार्केट यहाँ पर आ गया तो हम लोग यहाँ से मार्केट को ऊपर की तरफ पुश कर सकते हैं, तो वी विल गो लॉन्ग फ्रॉम दिस एरिया ऑल्सो। ओके, सो हमारा जोन रहेगा, एक तो ये वाला जोन रहेगा, ये वाला जोन रहेगा। मान लो न्यूज के पहले यहाँ पर आ गया तो भाई वी विल गो फॉर द बाय, और वी विल गो फॉर द बाय फ्रॉम 3064। ओके, अंटिल दैट तो भाई देखना पड़ेगा भाई मार्केट कितना गिर सकता है। यहाँ पर कोई भी प्रॉपर मार्केट ज्यादा काम नहीं कर रहा है, फिर भी जितना हो रहा है उतना मूव कर रहा है ठीक ठाक, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग भी। वी आर ऑल्सो डूइंग अ प्रॉपर एनालिसिस कि भाई आप लोग का लॉसेस कम हो एंड क्वांटिटी कम से ट्रेड करो तुम लोग भी। ठीक है, मैं बताऊँ, मैंने अभी बताया, अभी पूरा रिस्क ही है, देख रहा हूँ मैं भी। एक तो भाई हम लोग यहाँ से ट्राई करेंगे 3078 से, नहीं तो 3064 से। लेट इट फॉल, ओके लेट इट फॉल, क्योंकि अब देखोगे तो भाई मार्केट क्या कर रहा है, थोड़ी बहुत तो भाई सबको बाय का प्रॉफिट दे रहा है, फिर से गिरा रहा है। नहीं तो भाई एक ही बार में जितना प्रॉफिट आया उतना गिरा है। सो इट्स लाइक लॉजिकली मार्केट इज मूविंग टुडे ड्यू टू द हिस्ट्रिकल चेंजेस हुआ है बहुत सारे। मार्केट हैज चेंज्ड, so we also mention why gold is going down. Okay, so due to the inflation, okay, इस तरह बहुत कुछ हो रहा है। बताओ भाई, तुम हमको भी न्यूज ट्रेड है, बताओ भाई। भाई अभी तो मैंने बताया ब्रदर, अभी तो मैंने बताया, मान लो ये वाला ब्रेक कर दे न्यूज। व्हाट इज द टाइम ऑफ न्यूज, लेट मी चेक, 6 o'clock ना, कब है न्यूज, 5:42। So we have a news on 6 o'clock. So 6 o'clock we have a non-farm employment change and unemployment rate. तो मान लो ब्रदर ये ब्रेक कर दिया, ठीक है, 6 o'clock टाइम यहाँ पर मार्केट तो भाई डायरेक्टली सेल जाएगा, नहीं तो भाई कोई सपोर्ट पे है तो भाई मार्केट डायरेक्टली पुश करेगा ऊपर की तरफ। सिंपल, ओके। सो ड्रॉ योर सपोर्ट रेजिस्टेंस, एंड कहाँ पर है लिक्विडिटी देख लो, यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी है, ये वाला लो। तो
मार्केट मान लो कि ब्रेकआउट कर दिया, इसके नीचे एक रेड कलर कैंडल फॉर्म हो चुका है बिफोर न्यूज, मान लो 559 कैंडल इज हियर एज अ रेड, तो डायरेक्टली सेल पे चले जाना, ठीक है। नहीं तो भाई 559 पे मार्केट यहाँ पर है तो डायरेक्टली बाई पे चले जाना, नहीं तो यहाँ पर है तो बाई पे चले जाना, ठीक है। पोजीशन दिखा रही हूँ वहां से तुम ट्रेड करो, क्योंकि इस पोजीशन पे कोई कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। आई होप अंडरस्टैंड। Okay, tell about news. So we are just analyzing. You can see that last few days, I mean like yesterday and today, market has been made a huge damage to our understanding, beyond our understanding. If you see this, market has today itself has fallen like more than changes are done. 19 percentage, 20 percentage of changes are done today, and it's like more than 1 to 2% of fall. So if it break this, then obviously market will fall. Okay, कैंडल क्लोज हो जाए तो भाई नीचे की तरफ जाने के चांसेस है। कैंडल नीचे की तरफ क्लोज हो जाए तो मार्केट जाने के चांसेस है, नहीं तो भाई यहाँ से भी मार्केट ऊपर जाने के चांसेस। ओके, लेट इट क्लोज दिस कैंडल so that you will find out market is sell side और डाउन साइड। ओके, कैसे बनाए सब पूरे लॉन्ग टाइम फ्रेम पे चले जाओ ब्रदर। मार्केट में करेक्ट सपोर्ट कैसे बनाए, गो टू द लॉन्ग टाइम फ्रेम। लॉन्ग टाइम फ्रेम पे चले जाओ, लॉन्ग टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो। ओके, मार्केट अभी सेल पे जाएगा। ये भाई अभी कोई काम नहीं है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी वन टाइम टैप हो चुका था, मैंने बताया भी ऑलरेडी। इफ यू एक्सपेक्ट ऑलवेज टू ओबे योर order block, it won't do that. It's very complicated market today. Very complicated market today. If I draw the trend line also, let me check any possibilities. So no possibilities at all. Hey, what is happening here? ना जा रहा ठीक ठाक ऊपर की तरफ, it's not moving up proper well, not even a down also. Just wait, okay, just wait. It's not moving properly. आपका एलएफपी का क्या व्यू है? So I'll let you know the LFP. Okay. So what do you think today's market? If you just see through the long time frame, like one day, okay, I'll just remove all the drawings. Clear now, one day time frame. We can see the fair value gap order block is here. Okay. So we have a maximum chance of downfall in a one day time frame. Okay. Always try to mark every time frame. So first of all, if you just see a one day order block here, then market has the capability to fall up to 3031, but it will take a time. It won't fall today, so not in a day. Let's go to the 4 hours. So long time frame, what I can see, it need to fall down, then after need to go upside, तो भाई थोड़ी पहले नीचे गिरेगा, उसके बाद ऊपर जाने के चांसेस।
पहले नीचे गिरना चाहिए, उसके बाद ऊपर जाने का चांसेस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने लास्ट टाइम कल ट्रेड लिए थे वहाँ पर मार्केट है अभी। एंड रिसेंट का लो देख रहे हो तो जहाँ पर मैंने बोला 3030 विच इज लाइक हियर, सेम एरिया यहाँ पर। तो नीचे जाने का चांसेस है अभी भी। रिट्रेस ऑल दिस ब्रेकआउट हो चुका है। लॉन्ग टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो कि भाई मार्केट अभी भी नीचे की तरफ है, डाउन ट्रेंड एक है। ओके, तो 4 आवर्स ऑल्सो वी कैन सी भाई मार्केट हैज फॉलोइंग दी ट्रेल लाइन। मार्केट ने पुश किया था, अभी रिट्रेस करके सपोर्ट को ब्रेक किया, पुल बैक किया, थोड़ी बहुत नीचे की तरफ आना चाहिए 1 डे कैंडल तक। ओके, विच इज लाइक हियर, ये वाला जो भी डिमांड जोन है, डिमांड जोन तक आना चाहिए। सो 1 डे 4 आवर्स वी कैन सी इट्स अ डाउन ट्रेंड मार्केट। ओके, 1 hour, let's see in 1 hour you can see 1 hour also it is like following. If I see this also, what is happening bro, 1 hour I can see that it break the trend line from this area। 1 घंटे पे देखता हूँ तो भाई इसने ट्रेन लाइन को ब्रेक किया है, अभी पुल बैक के लिए नीचे आ रहा है। तो अभी भी टाइम है हमारे पास, देखना पड़ेगा, बट सेलिंग का चांसेस है अभी भी। फिर से चलते हैं 30 मिनट पे। 30 मिनट पे भी देखें तो 1 hour and 30 मिनट वी कैन सी सब बुलिश मूव। 1 घंटे या 20 मिनट पे हम लोग को थोड़ी बहुत बुलिश मूव मिल रहा है, बट इट्स अ डाउन, स्टिल इट्स अ डाउन मेरे लिए। ओके, आई कैन सी दिस ट्रेंड। तो मान लो ये वाला ब्रेक करता है तो भाई नीचे मार्केट। ओके, सो 1 hour 30 मिनट पे थोड़ी बहुत रिट्रेस पुल बैक दिखा रही है, बट 4 आवर्स 1 डे पर मार्केट पूरा नीचे की तरफ है। ओके, एंड वही हो रहा है यहाँ पर, वही काम कर रहा है यहाँ पर। इफ आई फॉलो दी प्राइस एक्शन आई कैन सी मार्केट विल गो अपसाइड। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन बना है मार्केट में, कॉम्प्लिकेटेड है आज। जैसे भी देखो, स्मॉल टाइम फ्रेम पे मार्केट इज बुलिश, बट इफ यू गो फॉर द लॉन्ग टाइम फ्रेम मार्केट इज बियरिश। 5 मिनट पे देखे, ओके 5 मिनट पे भी देखे तो मार्केट ने सेम ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया है, ऊपर की तरफ पुश करने का ट्राई है। अभी भी चांसेस आर देयर मार्केट टू गो अपसाइड इन अ स्मॉल टाइम फ्रेम। बट लॉन्ग टाइम फ्रेम पे हम लोग देख सकते हैं कि भाई डिमांड एंड लिक्विडिटी कहाँ पर है, नीचे पड़ी है, ये वाला लिक्विडिटी यहाँ पर पड़ी है, तो ऑब्वियसली मार्केट को नीचे आना चाहिए। ओके, सो हमारे लिए सिर्फ एक ही चांस होता है कि भाई ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट, ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ कैंडल फॉर्म हो जाए, देन वी कैन गो फॉर द सेल। ओके, I can see 4 hours, 1 hour market is downtrend, but if I go to the 5 minute, 15 minute, or 30 minute, I can see some trade and retrace. Okay, I can see some trade and retrace. So right now we are not sure yet until it break this area. If not, we have to wait and see. But I feel down. Okay, because long time frame has a downtrend. Let's see. ओके, सो आप लोग को क्या लगता है, सो व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू इन एलएफपी न्यूज़, आप लोग बताओ। सो व्हाट इज योर व्यू ऑन एलएफपी, आप लोग खुद बताओ, एंड आप लोग कोई भी बताओ। मैंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि भाई लॉन्ग टाइम फ्रेम पे देखो तो मार्केट बियरिश है, एंड स्मॉल टाइम फ्रेम पे देखो तो भाई मार्केट बुलिश है, बट ऑलवेज फॉलो द लॉन्ग टाइम फ्रेम। ठीक है, तो आप लोग बताओ आप लोग को क्या लगता है, एंड पुट योर कमेंट एंड टेल मी ना चैट बॉक्स। आप लोग चैट बॉक्स पे बताओ, आप लोग चैट बॉक्स पे बताओ ये आप जाएगा या नीचे, आई मीन डाउन जाएगा। सो आप लोग बताओ।
मेरा ड्राइंग तो सब मैंने रिमूव कर दिया अभी। मैंने 1 मिनट का और ब्लॉग बनाया था, सब कुछ बनाया था मैंने। 1 मिनट पे भी देखते हैं, 1 मिनट का जो भी और ब्लॉक है भाई, उसको अभी रेस्पेक्ट कर रहा है, मतलब देख रहे हैं, ये पूरा मार्केट बेकार बनाता है। शोल्डर, हेड, शोल्डर, वॉट इट फॉर्म, फिर भी देखोगे तो भाई आफ्टर making a trap, it's going upside, even though it made us 60 pips. Wow, from this order block. Okay, if it break this order block, obviously we will get a sell. We can see this order block, right? आप लोग का क्या व्यू है बताओ गाइस, आप लोग बताओगे तभी तो मैं भी बताऊं। आप लोग बताओ, आप लोग का क्या व्यू है। And it's obeying the order block and trend line. So your view is buy. Why do you think it's a buy? Why do you think? Why do you think it's a buy? Just want to know. Okay, not really, but I want to know the reason, because if I'm wrong or right, we can know, na? So that is the reason. Are you taking news trade in your account, sir? I'm just thinking, should I take or what? Because we already made a good profit. So if I take, I have to take it with a very low risk. I have to put a 20 pips of scalping SL. Yeah, I can take it, bro. I can take for 20 pips of scalping, and for the sale side, I will take it. Okay, I'm gonna go for the sale side. So what is your point of view? आप लोग को क्या लगता है? Give me a minute. Sorry guys. Off हो गया. Okay, now you can see me. So what is your view? आप लोग का क्या व्यू है? मेरे को लग रहा है तो भाई बियरिश की तरफ जाना चाहिए. ओके, ये तो ब्रेकआउट करेगा ही, और बाकी नीचे ही जाएगा लॉन्ग टाइम फ्रेम पे, वो पूरा बियरिश है. देखो नीचे का लिक्विडिटी जो पड़ी है वो लेने के लिए जाएगा मार्केट नीचे की तरफ. ओके, मार्केट पे जो भी लिक्विडिटी है वो लेने के लिए नीचे की तरफ जाएगा. मार्केट सेल पे गिरेगा. ओके, मार्केट विल फॉल minimum up to this low area to grab this liquidity. Okay, it will go downside. मेरे लिए तो वही है. I am also tracking the sell trade in gold. If it break the OB, I'll go sell with the medium risk. Yeah, go with the low risk because gold is crazy. Last 1 or 2 days, if you see, it is crazy. मूवी ट्रेलर ब्रदर आपने बताया नहीं, बाई क्यों बोल रहे हो? मैंने मेरा रीजन बताया कि भाई लॉन्ग टाइम पे मैंने देखा कि भाई सेलिंग पे है, इसीलिए मैंने सेलिंग बताया. एंड ट्रेड लाइन भी ब्रेकआउट हो चुका है, ऑर्डर ब्लॉक भी ब्रेकआउट हो चुका है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ. I did trade today. I don't know what to do. Yeah, same bro. It's really hard if you ask me. Market is full of complicated, but we will go for the sale side. Okay.
Okay, what is the time now? 58. Still we have a 2 minute more. Yeah, you have to check by yourself. You're asking me. I don't know. Okay. Are you guys ready? Are you guys gonna go for the buy side or sell side? Let me know, guys. Okay, I would go for the sell side. ठीक है? पता नहीं भाई, सही है तो सही रहेगा, नहीं तो just leave it. ওকে, দাদা এটা কি করে চ্যাট করে মিনিটে চার্ট বুঝতে পারি না দাদা, এটা কিসের চ্যাট? কোন মিনিটের চ্যাট কিছু বুঝতে পারছি না। আচ্ছা, তুমি যদি দেখো তুমি এখানে বুঝতে পারবে 1 মিনিটের চার্ট এটা। 1 মিনিট কেননা এখানে মেনশন করা আছে ওয়ান। ওকে, 1 মিনিটের চার্ট। তাহলে এই নাম্বার প্রাইসটা দেখে বোঝা যাবে ইটস আ গোল্ড চার্ট। ঠিক আছে, তাহলেও আমি বলে দিলাম গোল্ড চার্ট হে, एंड वी आर गोइंग विद अ सेल। 1 मिनट बाकी है। वो पॉजिटिव हो गया। ओके, तो मतलब गिरा नीचे की तरफ। ओके, सो गो फॉर द सेल। आई होप यू मेड अ प्रॉफिट। कोई भी लिया था भाई 80 पिप्स का। ओके, सो यू गाइस मेड इट और व्हाट? लेट मी नो, आप लोग प्रॉफिट किए कि नहीं। ओके, स्टे फॉर द सेल। आई विल अ प्रॉफिट, आई मेड इट। अभी तो भाई फ्लैक्चुएट हो रहा है बहुत। देखोगे तो भाई मेरा 180 पिप्स के ऊपर मेरा आया है। ठीक है, अभी भी होल्डिंग पे ही है। ठीक है, 40 seconds। या इट्स गॉन डाउन साइड ब्रो, इट्स सेल पे चला गया मार्केट। 80 पिप्स गिरा है। सेल। ओके, 1000 पिप्स के ऊपर सेल। भाई আরে উপর থেকে এখন কি হচ্ছে বলতো, প্রবলেম হচ্ছে আমার। ओके, सो आप लोग बताओ गाइस, क्या कर रहे हो? सेल पे कोई कोई प्रॉफिट किया कि नहीं? जस्ट लेट मी नो योर कमेंट बॉक्स। डू इन अ कमेंट गाइस। ओके, कौन कौन सेल पे प्रॉफिट किया? कौन कौन सेल पे प्रॉफिट किया? आर यू गाइस मे टेकन इन दिस सेल ट्रेड? नहीं लिया तो भाई मैंने क्या बताऊं, बोलो। सेल बताया था तुम लोग को, मैं भी सेल पे जा रहा हूँ, ये भी बताया मैंने। एंड रिसेंटली देखोगे तो भाई मेरा ऑलरेडी ट्रेड पे मेरा कम ही प्रॉफिट किया मैंने, फिर भी मैंने प्रॉफिट करके बाहर आ गया क्योंकि फ्लैक्चुएट हो रहा है बहुत। तो एक मिनट रुक जाओ, आई शो यू गाइस। तो क्योंकि तुम लोग भाई विश्वास नहीं करोगे, तो ये था मेरा चार्ट। एलडी प्लेयर 3000। ओके, एंड ये जो था अभी टुडे का दिखा देती हूँ। आई मीन सॉरी, हिस्ट्री जाकर आज देखोगे तो भाई आज मैंने एक ही ट्रेड अभी लिया, ये देखो रीजन का। ठीक है, और भी ऊपर आया था नीचे आया था, मैंने टीपी बना रखा था, फिर उसके बाद मैंने ट्रेडिंग पे कट कर दिया 60 पिप्स पे, $3000 का आ गया।
जस्ट नाउ took a trade, made it and came out. जो बोलता हूँ भाई वो मैं ट्रेड लिया हूँ एंड उस पर मैंने करके भी आ गया। ठीक है। हाँ। Okay. So that was the trade today. So history, this is the today date. Okay. So you can see this right now, 3032 ये भी जो भी है। Okay. लिया था बनाया भाई आ गया। अभी भी देखो भाई सेलिंग कैंडल पे चल रहा है तो भाई फ्लैक्चुएट के चक्कर में मैंने बाहर आ गया। क्यों करे भाई? क्यों हम लोग होल्ड करें? इतना बड़ा सेल आया था। ठीक है। तो आप लोग देखते रहो। And said is selling signal in free group. I just given you in a live, so why should I give them in a group? Tell me. So if they are not interested in okay watching our stream, then why should I show some interested in our Telegram? Because you guys are watching and you guys are listening. So that is the reason I have given you the trade. I have told you to take a sell, and I took and made it and came out. Simple way. If you haven't taken right now, also you can hold your trade, or you can go for the sale side till now. Also, you can make it a profit. Yeah. So it was gone to the 100 pips. It was gone to the 100 pips, but due to the fluctuation, you can see this more than 1300. But if you ask me, I took a trade from this area, so and I came out. Okay, मेरा तो भाई हो गया। आप लोग बताओ आप लोग का क्या चल रहा है? Yeah. So 60% of people are saying it's a buy. So it means you guys are failed taking a trade in a long side. And you guys made a loss, I hope. तो सेल्फ तो भाई मेरा प्रॉफिट आ गया। कट कर देती हूँ क्योंकि वन बाई व्यू, बट इट्स ओके। देख सकते हो सेल पे जाएगा भाई, सेल पे जाएगा। ठीक है। अभी भी होल्ड कर सकते हो भाई, कोई भी सेल पे जाना चाहते हो सेल पे जाओ, मेक इट अ प्रॉफिट। मेरा तो आज का हो गया इसलिए जस्ट टेलिंग यू गाइस। ओके। So you guys made or what? You guys take a trade or what? Due to there is a tool use, it was done like that. Fluctuation. You can see this fluctuation. Okay. It fall in a sell. Day after it gone upside. You can see this fall was for NFP. Then after again it gone up due to the unemployment claim. Okay, and you can see following the trend line again it's fall. So it will fall up to this low. अभी भी चाहते हो एंटर करो, सेल पे देख सकते हो इंस्टेंट 10-15 पिप्स का मूव मिल रहा है। ओके। आई गॉट मोर देन $5,000 इन दैट, बट इट्स ओके। So how many of you have taken a news trade? How many of you have taken a NFP news trade? Do comment, let me know guys। कौन कौन आज NFP न्यूज पे ट्रेड किया था? कौन कौन आज NFP न्यूज पे ट्रेड किया? Anyone?
Okay. ओके, टारगेट डन। और कुछ गाइस? और एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है? या would you buy in 3080 OB? Not really, buy. I told you, okay, sell good for 3001. I have told you, brother. You guys missed the chance. Sorry to say. I told you, I have given you the arrow direction. I told you go for the sale. Your target is up to here. I have shown you the arrow mark. If it break this, then it will go up to this low area, this 3080. Because in a long time frame, it's a selling market. I have told you everything. Okay. Even though you guys didn't listen, so your fault. If you see one candle itself given us how much pips, given us 1100 pips. एक मिनट पे 1100 गिरा। ओके। सो मैंने लिया था भाई, मैंने बताया था तुम लोग को भाई ट्रेड लो, ट्रेड करो। तुम लोग नहीं लिया। ओके। सो यू गाइस मिस्ड इट, यू गाइस मिस्ड इट। सो नथिंग टू से, सो डोंट एक्सपेक्ट कि भाई अभी बताओ अभी मेरे को ट्रेड लेना है। ट्रेड भाई आता नहीं है ठीक ठाक। ओके, तो यू हैव टू वेट फॉर द पेशेंसली एंड गो फॉर द ट्रेड। हाँ, ये वाला जो भी है, मार्केट को ये वाला लो तक आना चाहिए, ये वाला लो तक आना चाहिए। तो सो डोंट एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम मी, जस्ट सेल। ओके। लॉन्ग टाइम फ्रेम पे मैंने बताया था तुम लोग को भाई सेल है मार्केट, चले जाओ सेल पे। अभी भी जा सकते हो सेल पे। ओके, फ्रॉम डाउन बाय। If you ask me, I don't know, brother. If it continuously follow this trend, then we have to follow. So that is not proper area. I would say कि you can go for the long, but we can try from this area. Okay, we can try from 3065. So if it do some time pass, then we can understand that market is long. Even though I told you from here also, go for the long. If it break this, you'll get a trade up to this area, and it will go downside because there is nothing here. All this liquidity is here, so market will fall. Okay, we will tell you where to buy, but I told you go for this sale. How many of you have taken? When do you expect to buy again? It's not sure yet, brother. We have no expectation right now, but one chance we can take, and we can save from this area, because I can see some. Okay, this move, which is here, this green color candle, the 15-minute order block. So I hope you can see this order block. So 3070 or 69 we can expect. Okay, from 3, okay, already it came to the 670. So still it need to go to the 20 pips due to the 15-minute order block. And if you guys enter in a first entry, enter with a very low risk, because there is the low here. We all know that those are the trade which will mean like those who have taken a buy, the ratio will be like 50, 60 something. It might hold. Okay, so take a trade from this area. If you want to go for the long, you could with OBs here. Okay, how much pips did our trade go? How much pips did our trade go? Our trade has gone from this area, from this trend line. So if I just calculate, like I have taken a trade from this to here, 2600 point. Okay, so 2600 260 pips. 260 pips, market has fall. However, it's doing a pullback, but this area is pending. Okay, so I would suggest to go buy side, because it's a risky to take a buy. Okay, don't buy sell again. Yeah, that's I'm telling that to everyone.
So don't buy because this area is pending. 15-minute order block is here, and you can see the low is here. Until it fulfill this area, whatever it's doing, it's making a trap for these sellers. Those who have taken a sale from here, their target is up to here now, so they will come out this area, like this retrace area. Okay, 1 bit OB, and from this you might get one more sale. So these are the trap for the sellers. Those who have taken a sale, they are gonna come out now, and then after market again will fall. This is the trap for the area. Okay. How many of you have made a profit in a sell side? I took sale, made it profit. Anyone? Anyone taken? Okay. Have you guys taken any sell trade? Da, 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 da. It will go sell. तो देखते हैं भाई. Okay, okay. हाँ ब्रदर, हम तो सेलिंग पे ही है. मैंने सेलिंग किया था, अब बाहर आ गए क्योंकि यह वाला 15 मिनट का जो ऑर्डर ब्लॉक था, मैंने भी उसको देखकर मैंने ट्रेड लिया हूँ. एंड उसको फॉलो करके मैं चल रहा हूँ सेल के लिए. तो मेरा सेल था, यहाँ से मेरा सेल था जब एल न्यूज़ था. उस समय से मैंने टीपी रखा था, एंड उस टीपी मेरा हिट हो गया था. अभी भी बोला यहाँ तक टीपी फर्स्ट, एंड सेकेंड टीपी इज अप टू हियर. वो भी हिट हो जाएगा वेरी सुन. Takes a time. If I draw a shot from this area, that means it's more than, if you see, more than 2 is to का profit. ऐसा was above area. It is a continuous move. Yeah, 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 brother. Yes, it is a continuous move. So stay in a sell side. Don't go buy. Watch the market.
ओके, आज का तो मैंने ट्रेड ले चुका हूँ। यूएसटी जेपी बता देंगे ब्रदर। ठीक है, गोल्ड पे ऑब्वियसली सेल मेरा 260 पिप्स के ऊपर चला गया, फिर भी आप लोग चाहते हो आप लोग देख सकते हो। ओके ओके, ये था ट्रेड। कब का ट्रेड पता नहीं, देखकर तो मैंने छोड़ दिया था। यहाँ तक भाई ट्रेड दिया था मैंने। सेलिंग ही भाई, मैं तो सेलिंग पे होल्ड करके बैठा हूँ उस दिन से। ठीक है, एंड पूरा लो तक मैंने डिफाइन करके रखा हूँ यहाँ तक। एंड ये भी आप 4 आवर्स पे देख लो तो आई होप कुछ तो समझ में आएगा। ये था वो वाला जोन, कुछ ब्रेकआउट रिट्रेस हुआ था, उसके बाद मैंने बताया था कि गो फॉर दिस सेल। सेल तो भाई मेरा ऑलरेडी अच्छा खासा मिला है। यहाँ से भी कैलकुलेट करके देखो तो भाई मोर देन 150 पिप्स। एंड यहाँ से भी कैलकुलेट करके देखो तो 200 पिप्स। सो ऑब्वियसली मैं तो सेल की तरफ जाना चाहता हूँ यहाँ पर। दैट इज नो रीजन यूएसटी जेपीओई टू गो आउटसाइड। हाँ, एक और ब्लॉक तो तुमको यहाँ पर मिलेगा, लेकिन ये वैलिड रहेगा कि नहीं, क्योंकि नीचे का तो लो यहाँ पर पड़ी है, मार्केट का लो यहाँ तक आएगा। एंड ये वाला भी जोन है, जो भी फेयर वाली कैप है वो भी यहाँ पर है। इफ आई ट्रैक एंड होल्ड दिस ट्रेड, तो ऑब्वियसली नीचे की तरफ आना चाहिए मार्केट को। ठीक है, मेरे लिए तो सेल है। एंड ओके, मेरे लिए सेल है, क्योंकि देखो अभी तुम एंटर करोगे तो एसएल बड़ा हो जाएगा, टीपी छोटा हो जाएगा। ঠিক আছে, তুমি ইয়ে করো, তুমি অসুবিধা নেই, যাদের করেছো তার আগে দেখি। হ্যাঁ ঠিক আছে, অসুবিধা নেই, ইয়ে করো, তুমি দেখো, ও তো কথা বলছে, ও কথা বলে বলে দেখি তাদের কাছে পড়ে। হুম, ঠিক আছে। হুম, ঠিক আছে। ओके, तो मेरे लिए सेल है ब्रदर। आप बाय की तरफ जाना चाहते हो तो मैं और भी थोड़ी बहुत वेट करना पड़ेगा आपको। कैंडल थोड़ी बहुत ऊपर की तरफ जाए तभी बाय की तरफ जाना, क्योंकि यहाँ पर जो भी जोन है 1 आवर पर, 30 मिनट पर, आई कैन सी ये सब ब्रेकआउट हो चुका है। लेकिन ये फेक लग रहा है तो भाई और भी वेट करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, और भी देखना पड़ेगा। इसके ऊपर कोई भी बुलिश कैनल फॉर्म हो जाए, मान लो इसके ऊपर कोई भी बुलिश कैनल फॉर्म हो जाए तभी बाय की तरफ जाओ। नहीं तो ये धीरे धीरे करके बायर्स सेलर्स का दोनों को ट्रैप करके नीचे की तरफ आना चाहिए, क्योंकि कोई रीजन नहीं है कि भाई मार्केट के ऊपर की तरफ जाए। ऑलवेज मार्केट गोस वेर इज द प्लेस योर एसेल। तो जो जो बायर्स लोग बैठे हैं इस पोजीशन से लॉन्ग टाइम से, वो लोग का तो भाई बाहर आना पड़ेगा ना। तो उसका ऑब्वियसली यहाँ पर रहेगा एसेल।
Okay, if I calculate my our trade, 200, 2,700 points, that's the 270 pips, 270 pips of market fall. और भी फॉल हो सकता है अभी भी, क्योंकि लिक्विडिटी और भी नीचे पड़ी है, तो ठीक है। When we go for buy and gold, this is the zone for buy and gold, but you have to see a bullish candle, otherwise we have to wait. Okay, actually if you just see, this is the 50-bit order block, but are you able to hold your trade up to 3054? It's nearly 20 pips of candle. So if you have that, do hold, otherwise please don't hold, क्योंकि मार्केट और भी नीचे जा सकता है, जो है 3065 तक जा सकता है। ओके, 3065 जाने का भी चांसेस है। In a 15-bit order block, you will find out this is your 15-bit order block, but 5-minute order block is here. That means we have a still little bit of down move. तो हम लोग को थोड़ी बहुत नीचे की तरफ मूव मिल सकता है और भी, but if you enter, divide your lot and enter for the buy, if you ask me, because I would go for the continuous trend, but continuous trend is a selling trend. Okay, but if you enter now, enter with a very low risk, क्योंकि 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक देखकर मैं बता रहा हूँ कि भाई बाय की तरफ जा सकते हो, लेकिन 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक तुमको 60 पर मिलेगा, 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक। सो बी केयरफुल इफ यू टेक एंड मेक इट एनी डिसीजन। भाई इसीलिए मैंने सेल पे तुम लोग को प्रॉफिट का ट्रेड दिया था, अभी एक्सपेक्ट करो कि भाई बाय के भी ट्रेड दो, तो भाई इस पे थोड़ी गलत हो सकता हूँ मैं, ठीक है, तो आप खुद देख कर ट्रेड करो। Because I don't know, I just following the trend and market is selling trend. So that is the reason I told you go for the sell, not for the buy. But obviously, if you want to go for the buy, there is a risk. So we have to risk. Then you might get a profit. But I told you, if you take a risk in a sell, you will get a profit. So that is the difference there. Okay, I was confident in sell side, but I'm not sure in a buy side, because I can see there is a low here, and I can see 5-minute order block will be here. So if you calculate, this is the 5-minute order block. So from here to here, that means 3065. So I can say still there is a chances of sell side. But if you enter, then enter in a proper money management, divide your lot size and enter for the trade in a long. Okay. Okay. मुझे मुझे ঠান্ডার মধ্যে বসে চা দিচ্ছি আমি, কেন হচ্ছিস? এই আবার ঠান্ডা লেগে রয়েছে, নাকটা একটু জল পড়ছে, মনে হচ্ছে একটা চিল জায়গার মধ্যে বসে চা খাচ্ছি, এরকম হচ্ছে ঠান্ডার মধ্যে। ঠান্ডা লাগবে ঠান্ডা। So tell me guys, are you guys for the long side? If you're ready for the long, enter with a very low risk, क्योंकि 65 तक जाने के chances है, and if you're lucky, you'll make a profit from here due to the 15-minute order block.
But if it respect a 5 minute order block, that means that is still down here. And if it doesn't respect to grab this liquidity, that means you're gonna have a huge losses. So don't say anything to me that I followed you and I made a loss. If you will say followed me, then you should have followed the sell side. Okay. यहाँ से एक्सपेक्टेशन तो हमारा है, लेकिन जो सेलिंग पे प्रॉफिट कर लिया भाई उसका मजा अलग ही है। यहाँ से हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे बाई 54 से 55 से 55 से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाई। ओके 55 से नहीं तो भाई मेरे पास बैलेंस है, मैं बाई की तरफ जाना चाहता हूँ। यूजुअली आई टेक अ ट्रेड इन 0.05, then take a trade with a 0.01. Okay, from here you can take a 0.01. Second trade you can take a trade from one more from here 65. If it goes down you can take one more trade from here 60. So if you can divide your lot size and take a trade, then you can enter. Okay, you can enter. No, I don't have a balance, then sorry, don't take it. 71 to 77, 1 मिनट पे 5 मिनट पे कितना चला गया? 72 78 78 मतलब okay buy, okay buy if OB rejects, right? I mean if you buy, okay, that means you have to buy with very low risk, and I'm not sure that you'll make it a profit in a buy set or what, because I'm just telling you buy due to the order block, or you have to take a risk if you want to go for the buy, or if you don't want to take a risk then don't enter. I would say this is the risky. If you go for the buy you can make a scalping profit, and if you're lucky you can make a profit. Just the way you can see suddenly it moved 70 to 80 pips. Okay, so you can, okay, so I'm not saying that you can make it a, you can make it a profit in a long, but it will be a very risky, because that means we are going against the trend. Okay, our trend is selling trend, right? Our trend is full of selling, but if you want to go for the buy, that means you're going against the trend, and you're gonna expecting at that much, so that is not proper possible, I would say. You can get only scalping profit if you're lucky, but I won't say, choice is yours. Okay, I would not enter, but you can see 70 to 80 pips it's gone. Okay, okay, yeah, but not easily. All OB will hit today 3000 for sure. Okay, news in favor of USD. Now market will go to the 3000. Let's see, let's see. Yeah, 3000, this area I've been telling you. And 3000. Okay, so that is my same idea. 3000. Okay, let me check in 1 day order block. My 1 day order block is here. So same as I got it now. 3028 to 3009 something. Okay, still there is a zone for the sell side. Okay, I'm not going for the buy, brother. Buy is risky. If you go for the buy, your SL might hit and you don't know where to put your SL. आप एसएल कहाँ पर रखोगे? इसके नीचे रखोगे तो इजीली हिट हो जाएगा। ओके, बट obviously chances for the sale only. सेल का चांसेस है, बाय का नहीं. बाय ओनली स्कैल्पिंग, एंड इफ यू आर लकी आप लोग स्कैल्पिंग पे प्रॉफिट कर सकते हो.
If not, it's a sell. Okay. Yeah. आई वाला सेल ब्रो, सेल। डीएक्स ऊपर जा रहा है तो यूएसडी जेपीवाई भी जा सकता है, इस लॉजिक से बाई किया, फिर से सेल करते हैं। भाई आजकल 2 दिन पे लॉजिक कोई काम नहीं कर रहा है, आपको भी पता है। मैंने तो भाई प्रॉफिट कर लिया। आई विल क्लोज माई स्ट्रीम वेरी सून। ठीक है। आप लोग को भी मैंने दिया था ट्रेड, जो भी था 200 पिप्स के ऊपर, 250 पिप्स के ऊपर मार्केट चला गया। हमारा सेलिंग ट्रेड यहाँ से था इलेक्ट्रिक पे। एंड तुम लोग को मैंने ड्रॉ करके, ग्राफ करके, ये वाला भी इंडिकेशन था, ये वाला भी फर्स्ट टीपी था, सेकंड टीपी यहाँ तक था, ऑर्डर ब्लॉक तक पूरा दे चुका हूँ। फिर भी एक्सपेक्ट करा कि भाई फिर से मैं भाई की तरफ प्रॉफिट करना चाहता हूँ, तो भाई मैं तो भाई कोई सजेस्ट नहीं करूंगा इस पे। ठीक है। एंड हमारा जो भी ट्रेड है यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई भी ऊपर की तरफ जा रहा है भाई। ओके। डीएक्सवाई समटाइम फॉलोस नहीं करता है, ये वाला भी गोइंग अपसाइड नाउ, बट लेट इट बी। मोर देन टीपी, मोर देन एसएलवी गॉट द टीपी। डीएक्सवाई का क्या हाल है? डीएक्सवाई ऊपर जा रहा है तो भाई गोल्ड नीचे जाएगा। एंड आई कैन सी दैट डीएक्सवाई ऑलरेडी वन टाइम इट ब्रेक। ऑब्वियसली डीएक्सवाई जाएगा ऊपर, गोल्ड जाएगा नीचे। यही मेरा लॉजिक है। ठीक है। तो ये वाला भी स्क्रॉल करके देखोगे तो यू विल फाइंड आउट कि ये वाला भी एक पुल बैक है। पुल बैक से ऊपर की तरफ जाना चाहिए मार्केट को। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एग्जैक्टली जेपीओ बाई की तरफ जाएगा, सिंपल सा है, क्योंकि यहाँ पर जो भी था ये ब्रेकआउट कर चुका है। टीपी कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक जाएगा मार्केट। एग्जैक्टली जेपीवाई। ओके। दिस इज 5 मिनट टाइम फ्रेम। मेरे लिए तो भाई लॉन्ग है, बट एस एल टी पी रिगार्डिंग योर कैपिटल रखना पड़ेगा, क्योंकि लो तुम्हारा यहाँ पर मिलेगा। सो 1:1 तुम्हारा मिलेगा। एनजेडी यूएसडी भी सेम चल रहा है, एनजेडी जेपीवाई एनजेडी यूएसडी सेम चल रहा है। जीबीपी जेपीआई पे थोड़ी बहुत दिक्कत है यहाँ पर, क्योंकि इफ आई फॉलो द ट्रेंड इट्स अ सेलिंग ट्रेंड, बट इफ आई सी द रिट्रेस देन ऑब्वियसली और भी ऊपर जाएगा मार्केट। ये तो भाई लॉन्ग पे ही है मार्केट। इसको ब्रेकआउट करने दो, डायरेक्टली ऊपर की तरफ बाई की तरफ चले जाना। ये ब्रेकआउट करे, गो फॉर द बाई। इट इज ऑन नैस्डैक। सो एनजेडी पर जो भी है न्यूजीलैंड डॉलर, तो तुम वहां पर चले जाओ लॉन्ग की तरफ। ये भी लॉन्ग है। ये है यूएसडी कैड। ये वाला तुमको मिस कर दिया था भाई, ये वाला डोंट मिस दिस एरिया, क्योंकि इफ यू फेक मूव दिस, तो भाई एक तो भाई तुमको यहाँ से मूव मिलेगा, नहीं तो भाई यहाँ से मूव मिलेगा। तो ऑब्वियसली मूव तुमको बाई की तरफ ही मिलेगा। ठीक है। और जेपीओ और जेपी थोड़ी बहुत नीचे की तरफ पुल बैक दे रहा है, सेम एस जीबीपी जेपीआई और जेपीआई नीचे की तरफ पुल बैक कर ले दो, उसके बाद ऊपर की तरफ बाई की तरफ चले जाओ। ऑल दी करेंसी आर मूविंग इन द सेम, तो बाई की तरफ जाना चाहिए। ठीक है। ब्रेकआउट किया, बाई। ऑल दिस थिंग्स प्रॉपर मनी मैनेजमेंट करो, और जीबीपी जेपीआई डू दैट, यू कैन मेक इट। ओके। ये वाला मिस बीटीसी यूएसटी। ओके। ये वाला तो थोड़ी बहुत ऊपर की तरफ मूव किया था गाइस, बीटीसी यूएसडी। ओके। ये था प्रॉपर गोल्डन जोन। गोल्डन जोन पे मार्केट ने बीटीसी मूव किया है।
बीटीसी का ये सब रखेगा इसके नीचे। ओके, क्योंकि दिस इज द गोल्डन फीबो जोन बीटीसी। पहले ये मैंने कब दिया था भाई, कल ही दिया था, कल मैंने बाय दिया था तुम लोग को। मोर देन एस एल, वी गॉट अ टीपी। आई मीन लाइक हम लोग को कुछ तो मिला, यहाँ से यहाँ तक मिला। कितना पॉइंट मिला था फिर भी कैलकुलेट करके देखे। हमारा एंट्री से मार्केट आया था भाई 25,000 पॉइंट, मतलब 250 पिप्स, 82 से 84। ठीक है, कोई ना। इथेरियम भी सेम हुआ था। इथेरियम भी हम लोग को यहाँ से लॉन्ग मिला था। मैंने बताया जब तक ये ब्रेक नहीं करे तब तक सेल पे मत जाना। टैप किया, मार्केट ने भागा पूरा ऊपर की तरफ। सेम दिस बीटीसी, ये वाला बीटीसी भी मैंने डबल से दिया था ट्रेड। एंड ये है जीबीपी यूएसटी। जीबीपी यूएसटी यहाँ से लॉन्ग, प्रॉपर वेट कल मैंने दिया था ये वाला। एंड ये अभी ऊपर की तरफ मूव कर दिया ड्यू टू दी ऑर्डर ब्लॉक, बट इट्स ओके फाइन। एंड ये वाला तो अभी भी नीचे आने का भी चांसेस है बहुत। सो वी हैव अ चांसेस टू मार्केट टू फॉल। अभी भी चांसेस है, ये वाला ब्रेक किया तो भाई तभी मार्केट नीचे, नहीं तो भाई पूरा ऊपर की तरफ जाएगा यूरो यूएसटी। फिर से हम लोग चले जाते हैं हमारे गोल्ड पे। गोल्ड 5 मिनट पे बाई सेल दोनों खेल रहा है। ओके सर, स्विंग के लिए बाई करना है, कौन सा लेवल से बेस्ट रहेगा? देखो भाई, बाई के लिए अभी मत एक्सपेक्ट करो मिस्ट्री माइंड, क्योंकि मार्केट पूरा साइडवेज पे चल रहा है। तुमको बाई का प्रॉफिट देखा कर नीचे की तरफ जाने के भी चांसेस है। तो ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग फॉर दी बाई। ये सेलर्स लोग को फिर से बाहर निकलने के लिए ट्राई कर रहा है, बट ये जोन जो है यही बाइंग का जोन है, 50 मिनट ऑर्डर ब्लॉक। ये मैंने 15 मिनट का आपको दिखा सकता हूँ। मैंने बताया कि भाई आपके पास बैलेंस है तभी एंटर करना, क्योंकि ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, यू कैन फाइंड आउट कितना पिप्स का ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ से लो यानी यहाँ से हाई, मतलब 150 पिप्स का तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक है। तो मतलब 0.01 पे ट्रेड करो तो भाई $15 का एसएल रहेगा आपका। इसीलिए आप लोग को मैंने बोला कि भाई आपका जो भी लॉसेस है डिवाइड करके तुम 50 से एक ट्रेड करो यहाँ से। और एक ट्रेड 65 से करने के लिए बोला था, क्योंकि 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक वहां पर मिल रहा है। ये देखो 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक तुमको कहाँ पर मिल रहा है, ये वाला जो रेड कलर कैंडल है, ये रेड कलर कैंडल ना। हाँ, ये वाला जो रेड कलर कैंडल है, रेड कलर कैंडल कहाँ पर क्लोजिंग हो रहा है, ओपनिंग। रेड कलर का कैंडल ओपनिंग हुआ है 65, तो मतलब सेकेंड ट्रेड तुमको 65 से लेना है। फर्स्ट ट्रेड 70, सेकेंड ट्रेड 65, थर्ड ट्रेड यू कैन टेक इट फ्रॉम 59। तो इसी तरह तुमको लॉट से डिवाइड करके तुमको लेना है ट्रेड। एंड कल का ट्रेड हमारा 800 पॉइंट तक गिरा था, आई मीन इंक्रीज हुआ था। सो yesterday I took trade in a buy, we made a profit in a buy side। ठीक है, जैसे देखोगे आपको पता ही है, कल मैंने आप लोग को बताया था कि भाई गो फॉर दी बाई। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ गॉन फॉर दी बाई। जिसने जिसने बाय किया था भाई उसका तो प्रॉफिट हुआ था। आई रिमेम्बर 1 or 2 मेंबर्स टू का बाय ट्रेड, उसने प्रॉफिट किया था। एक मिनट रुक जाओ। ओके, तो ये था मेरा कल का। मैंने कल भी ट्रेड लिया था स्टेज जाकर भाई, लास्ट वीक नहीं, मैंने ये आज का ट्रेड था। कस्टम ट्रेड में कल देखेंगे तो भाई कल का, ठीक है। सो थ्री थ्री पे चाहे तो भाई कल जो मैंने लिया था $12,000 का, ठीक है। तो ये था स्टोरी का ट्रेड जो मैंने ट्रेड लेकर आ गए बाहर। ठीक है, कल मैंने बताया था कि भाई गो स्टे फॉर द लॉन्ग। आई डोंट नो हाउ इफ यू रिमेंबर। आज भी मैंने बताया कि भाई सेल पे जाओ। तो टुडे मैंने ये वाला छोटा सा मैंने स्कैल्प किया था, उस पर 60 पिप्स पे मैंने बाहर आ गया, क्योंकि फ्लैक्चुएशन पे मेरा ट्रेनिंग हिट हो चुका था उस पर। नहीं तो भाई इसका होल्डिंग करते तो भाई अच्छा खासा मेरा सेलिंग में प्रॉफिट आ जाता। फिर भी एटलीस्ट मैंने तो कुछ प्रॉफिट किया हूँ। एंड आज का डे आई क्लोज इट। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि भाई कोई प्रॉफिट नहीं किया, हो गया प्रॉफिट आज का भी ट्रेड लेकर।
ठीक है, आई वुड सजेस्ट कि भाई सेव करो, अभी एक ही ट्रेड लो भाई, अच्छा खासा प्रॉफिट बनाओ, ऐसा नहीं कि भाई बार बार ट्रेड करना, यू डोंट हैव टू टेक मेनी ट्रेड, टेक इट वन ट्रेड, मेक इट प्रॉफिट, कम आउट फ्रॉम द मार्केट। कल मैंने लिया था, एंड आज मैंने अभी आपके सामने लाइव पे लिया था ट्रेड, आई टोल्ड यू गो फॉर दिस सेल, मैंने लिया था, तो दैट्स इट ब्रो। ओके, ये था ट्रेड, एंड वो जो वो बीच पे से चल रहा है 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक से जो चल रहा है भाई, लग रहा है तो भाई अभी पूरा ऊपर की तरफ जाएगा, जो भी पुल बैक है, पुल बैक तुम्हारा मिलेगा 29 से 92 से, तो अभी भी 50 60 100 पिप्स तक ऊपर जाने का चांसेस है, बट क्या है कि भाई एसएल रखने प्रॉब्लम हो जाएगा, ओके, यू विल हैव अ प्रॉब्लम टू कीप योर एसएल, इसीलिए मैंने इग्नोर किया था। 70 से 87 मतलब 170 180 पिप्स तक मार्केट चला गया फिर से। ठीक है, तो आज के लिए भी बस इतना ही। मान लो ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक, देन गो फॉर दिस सेल अप टू 3030, ओके। सो कोई भी ट्रेड लेना चाहता है यहाँ से यहाँ तक सेल करना, जब ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो जाएगा कैंडल क्लोज करेगा नीचे की तरफ, नहीं तो भाई ये जो मार्केट जा रहा है भाई उसको फ्लो कर ले दो, फ्लो पे जाने दो, उसके बाद भाई यहाँ से तुम लोग एक ट्राई कर सकते हो ट्रेड, जो है 3105, मैं तो और कोई ट्रेड नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। सो दैट वाज द ट्रेड टुडे व्हिच वी हैव गिवन यू, एंड आई होप जो जो लिया था भाई ये मेरा प्रॉफिट, ठीक है। तो इफ यू हैव एनी अदर डाउट you can ask in our chat box right now, otherwise we will see you on Monday. Okay, so we will close our stream now and we will see you on Monday. Okay. So thank you guys. We will see you on Monday. So happy weekend. Enjoy your week. Hmm. Responsibility. Okay.